Hello students. So this is our first lecture for your NET JRF preparation, and before starting this particular lecture, I would like to bring forth a point that the kind of questions that do come, they are mostly based on your general understanding, basics, got it? But there will always be a few questions which will be chasing exceptions, okay, beyond the general facts might be asked. So here at Shubha Ranjan, we will try to bring as many facts as we can. But then this chase should not become your ultimate objective. Rather, we should focus on the concepts, the key terminologies, and the very basics and foundations of all the thinkers, all the concepts. And with the help of notes and the tests, we will focus on certain facts which we do not generally come across in our normal readings and the normal text. Okay, so rest assured, we are going to delve into NET JRF preparation in a very deep method. So don't worry on those aspects. Now, I will be starting with Western political thought. Western political thought. Got it? Now, if you see, there are three terms which are given here. That means there might be some comparative thing, or there might be some essence to all these three terms. So when I say Western, that means there is some antithesis to it. Got it? That will be Indian thought, which we will do again eventually in detail. Now, there will be a difference between the way of thinking, the way of doing philosophy in the Western tradition versus Indian tradition. And that is why your syllabus expects you, on one hand, to go for Western thinkers in detail, and then it expects you to go for Indian thinkers in detail. But there might be some convergences around it. Got it? For example, Aurobindo Ghosh, he will try to learn something from German philosophy. Got it? And that is why it is said that you will find a lot of similarity in German philosophy and Indian philosophy, especially when you see the thoughts of Aurobindo. So Hegel in Western thought is known as what? Great synthesizer, because he's trying to synthesize a lot of ways of gaining knowledge. Got it? So Hegel's epistemology to an extent influences Aurobindo's epistemology. So somewhere down the line, you will also find some convergences, but broadly, Western thought and Indian thought differ. How? Western thought, it is said, is mostly dialectic. That means what? There's a tradition of questioning. They don't accept what is given as it is. And when you will see the chain of thinkers, which we will do, starting from Socrates, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Bentham, Locke, Mill, etc., they are questioning some existing traditions, and through that questioning and all, they are helping the evolution of Western political thought. But on the other hand, when you look for Indian thought is mostly didactic. Didactic means gyan dena, teaching. So whatever thoughts have come down, they have been accepted mostly unquestioningly. Why? Because India for the longest period has seen Guru Shishya Parampara and all. And now this difference which I am telling you is a very Western perspective. There will be counter arguments as well, which we will see more in a detailed perspective when we will do approaches to political theory and all. But for time being, we will have to deconstruct that when we talk about Western political thought, what in which zone or in which contradistinction we are trying to understand Western. So Western versus Indian, Pashchimi बनाम पूर्वी, ठीक है, पूर्वी बनाम पश्चिमी. अब didactic means mostly you accept the
knowledge, the philosophies unquestioningly. But then this is also a very harsh judgment of Indian philosophical tradition and all, because in India also you will find that throughout there have been questionings, there have been revolts, and we see the evolution of multiple ways of life within India. So this is a very questionable thing, but as a student of political science, you may start with this kind of understanding that Western thought is dialectical and Indian thought is mostly didactic. Now, moving on, what is political? What is political? Now, the political word can be derived from the term polis. Polis. Now, polis is generally ascribed to the city states of Athens. ठीक है, Athens हो गया, Sparta हो गया and all. But you know, the city states and the concept of state that has evolved throughout. Got it? So we have moved from city states, then we saw Roman kingdom, empires, then we saw the medieval states, then in modern times we talk about nation states. But throughout, the state, the nation states are at the core of the thought process that we are going to do in political science. Got it? And that is why Gardner says that political science starts and ends with the state. So state is going to be there, and political science will try to understand what a state does, how governance is done, what are the institutions related to that, and various theories around it. Got it? Now, the last term is thought. Now, in a very layman language, when we say thought, this term generally denotes thinking of an age. Thinking of an age. ठीक है, तो age is very relative term. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की मॉडर्न जेनजी की क्या थिंकिंग है, ठीक है, तो दिस इज थिंकिंग ऑफ एन एज, एंड इन प्रेजेंट टाइम एज इज श्रिंकिंग लाइक एनीथिंग. ठीक है, 10 साल में यू कैन फील द जनरेशन डिफरेंस इन ऑल. बट यहाँ पे जब आप थिंकिंग ऑफ एन एज की बात कर रहे हो, तो यू जनरली अंडरस्टैंड द एंशिएंट थॉट, द मिडीवियल थॉट, मॉडर्न थॉट, पोस्ट मॉडर्न थॉट. तो ये सब एजेस डिफाइन की जा रही हैं, एंड in that thought process or in that age, there will be various scholars, there will be various thinkers, there will be various philosophers. Got it? तो एरिस्टोटल, प्लेटो ऑलमोस्ट एक एज को बिलोंग कर रहे हैं. फिर आपके जो बेंथम, हॉब्स, लॉक, मिल हैं, ये एक एज को डिफाइन कर रहे हैं. मिल विल कम इन अ ट्रांजिशनल पीरियड. फिर आपको उसके बाद मॉडर्न थॉट्स और दिखने को मिलेगा, फिर पोस्ट मॉडर्न आ जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज हाउ थिंग्स मूव. दिस इज व्हाट वी कॉल थॉट. सो थॉट, अगर ऐसा देखो, इफ यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, थॉट will be the outer periphery or the main Venn diagram. ठीक है, it will subsume theory. It will subsume theory. Got it? Now theory is what? Again, approaches to political theory is part of comparative political science that will be dealt with in detail. I'm just introducing here and trying to make you understand where are we headed. Got it? So when I say theory, very basic thing about theory is explanation. What do you explain? You try to explain the happenings around you, the phenomena around you. Got it? Theory is what it does. It tries to explain what is happening around you. Now, when we say political theory will try to make you explain that how political phenomena are happening around you, how they affect you. Got it? So theory building is an exercise where we try to give some general statements. Where we try to give some general statements with regard to happenings around you. ठीक है, आप एक ऐसे स्टेटमेंट के माध्यम से यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज अ फ्यू थिंग्स. गॉट इट? सो
theory can also be, if theory is explaining something, if we say theory is an explanation, theories can be of two types. Got it? Theories can be of two types. One is known as normative political theory and other is known as descriptive theory, descriptive political theory. Normative political theory and descriptive political theory. Now, normative political theory will generally deal with the issues of values. Got it? When I say values, it means ought to be things. Ought to be things. ठीक है? अब जितनी liberty, equality, इन सब से संबंधित whatever you try to understand, that will come in your normative political theory. So when we see republic, justice is a kind of your normative political theory. Got it? And when we talk about descriptive political theory, as the name suggests, it is all about describing what is exactly going on. ठीक है? So it focuses on what is question, not ought to be, जो है सामने में. ठीक है? For example, recently elections happened in Haryana. तो normative क्या था? जो exit polls predict कर रहे थे. Although it was based on some data only, but वो normativism हुआ. क्यों? They were predicting something else. But when you go for description, when you go for the vote tallies and all, you understand that reality is something different. Got it? So descriptive political theories are also important. They try to understand public opinion, voter behavior, so on, etc. Got it? So these are two broad trends with respect to theorizing things. One is normative political theory, another is descriptive political theory. Now, again, students generally come across two terms and they find it quite confusing all the time. One is ontology. Got it? And second is epistemology. One is ontology, another is epistemology. ठीक है? Now, ontology basically says how one perceives reality. How one perceives reality. ठीक? तो किसी के लिए reality is all about matter and किसी के लिए reality is all about ideas. ठीक है? For example, एक person के लिए पेन का आइडिया ही सब कुछ होगा. ठीक है? तो he will say that पेन की इंपॉर्टेंस किस बात में? What is the essence of pen? That anything which is able to write, that is the essence of pen. इसलिए बनाई गई. तो वो आइडिया में जा रहे हैं. But then there will be some other people who will differentiate between pen on the basis of कितनी महंगी है, what is the brand, what kind of color does it gives you to write, etc. Got it? तो वो लोग मैटर में जा रहे हैं. तो जो लोग मैटर में जाते हैं, ठीक है, they are known as materialist. ठीक है? Those who give importance to matter, they are known as materialist. तो आपकी नजर में आपके जो सिलेबस है, who are the materialist philosophers? एक तो आपके बेंथम हो गए, then you have Hobbes and Marx. ठीक है? Marx. And when I say anybody who gives importance to ideas, that means essence, that means forms. ठीक? तो Plato has developed a theory of form. In theory of forms, he is trying to understand that if you have to understand something, first you will have to understand the definition of that thing. Why? Because the definition or concept, the essence, that is the true knowledge. Everything else will change. Got it? And that is why with his theory of forms, we also see linked another concept known as the concept of dividing lines, because dividing lines actually differentiates between different kinds of knowledge.
hierarchy of knowledge. Got it? One knowledge which is around you, the material world. Another knowledge belongs to the intelligent world. ठीक है? तो जो आपके अराउंड में है, इस वर्ल्ड में जो नॉलेज है, वो तो आप ऐसे भी ऑब्जर्व करके कर सकते हो, फील करके कर सकते हो थ्रू योर सेंसेस. बट द इंटेलिजेंट नॉलेज कैन ऑलवेज बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड रीजन. रैशनैलिटी की इंपॉर्टेंस आ जाएगी वहां पे. गॉट इट? So ideas, when we say ideas means essence, forms, etc. And जो जिनकी ontology ideas है, they will be known as what? Idealist. They will be known as idealist. Got it? Now, linked to ontology is your epistemology. Okay? Epistemology is theory of knowledge. Theory of knowledge. Now, for a person whose ontology is matter, that means he is materialist, वो कैसे knowledge gain करेगा? Theory of knowledge is all about understanding your reality. You have a view on reality, now you want to understand the reality. How will you understand that kind of reality? तो matter को आप कैसे करते हो? Observe करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, ठीक है? यू गेट टू नो अबाउट इट थ्रू योर सेंसेस. गॉट इट? तो इनकी एपिस्टेमोलॉजी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी. यही कई बार मेथड होता है साइंस का. ठीक, साइंस का मेथड यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इसीलिए साइंस के मेथड को एक शब्द और बोला जाता है, inductive method. Inductive method. Got it? Now, for those for whom ideas are more important, idealists, how will they get to understand about ideas? क्योंकि आइडिया तो आप सेंसेस से नहीं समझ सकते. तो आइडियाज को यदि आपको समझना है तो यू विल नीड रीजन, यू विल नीड लॉजिक. ठीक है? जैसे मैथ्स में भी हेंस प्रूव करते हो, आप इमेजिन करते हो ना चीजों को, दैट इज लॉजिक. गॉट इट? तो आइडियलिस्ट की एपिस्टेमोलॉजी और देयर थियरी ऑफ नॉलेज, देयर वे टू गेन नॉलेज फॉर देमसेल्व्स विल बी बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक. ठीक है? इसी को एक और वो नाम दिया जाता है डिडक्टिव, डिडक्टिव लॉजिक. इसी को हम बोल देते हैं डिडक्टिव लॉजिक. Now, what is the difference between inductive logic and deductive logic? Now, inductivism is generally based, or it moves from particular to general. What is particular here? You keep observing things, and when those things show certain repetitions, then you might want to come up with some hypothesis कि भाई मेरे को ये टेस्टिंग करनी है. And though that hypothesis is then put to certain test, if that hypothesis succeeds, then you come with a general statement, and that general statement becomes your theory. तो आप एक एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप एक थियरटाइजेशन करने जा रहे हो. दैट इज नोन एज इंडक्टिव लॉजिक. गॉट इट? मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, दिस इज व्हाट साइंस डज. Keep observing everything, and once you find some pattern, some causal relationship in happening of those patterns and all, at the end of the day you come up with a general explanation, जो कि हमने बताया कि theory होती है. And that's why this is known as inductive logic. You're inducing. How? By observing, by experimentation, by moving from particular to general. Now इसका ठीक opposite आपका होता है deductivism, where you move from general to
particular. Got it? So here what happens is you come up with some broad statement showing your theory, but उसको prove करने के लिए कुछ नहीं है, and you will try to prove that particular statement or explanation with the help of reason, logic लगाते आप उसको prove करते बैठोगे. Got it? So that is known as deductive logic. Now there's a debate whether inductive logic is superior or deductive logic is superior, but I think this debate may be settled for all if we invoke Karl Popper. Got it? If we invoke Karl Popper. Now Karl Popper introduced a concept of falsification. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ना तो साइंस भी प्योरली लॉजिकल है या साइंस भी प्योरली इंडक्टिव नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. कितना वेरीफाई करते रहोगे? ठीक है, आपको हर जगह व्हाइट स्वान दिख रहे हैं, डेटा लाते रहो, वेरीफाई हो रहा है, बट द मोमेंट यू सी अ ब्लैक स्वान योर इंडक्टिव लॉजिक फेल्स. तो rather than going for verification, go for falsification. तो as long as you're not finding a say negative punch, आपको आपकी जब तक थियरी डिस्प्रूव नहीं हो रही है तब तक मान के चलो कि आपकी थियरी ठीक है. But the moment you find a negative outcome, that means your theory stands falsified. Got it? And Popper believes that even science learns from deductivism. साइंस का मेथड जो है कहीं ना कहीं डिडक्टिविज्म से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस और व्हेन यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर रिसर्च एरिया एंड ऑल, आप पहले डिडक्टिव ही एक ग्रैंड थियरी बिल्ड करते हो एंड देन यू ट्राई टू टोन इट डाउन इवेंचुअली. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्म इफ इवन इफ साइंस एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम डिडक्शन. गॉट इट? तो कार्ल पॉपर इज ट्राइंग टू, यू मे से एक्चुअली ट्राइंग to act as a bridge between these two logics. Got it? So this is your broad introduction vis-a-vis how this class will proceed. This is a very basic thing. Theory ka detail will be done in your approaches, but as of now to start with, for a layman जिनको नई चीजें समझ में आती हैं, they can start from here. Got it? Now एक और difference आता है. If we have seen theory, then what is ideology? We have seen theory, then what is ideology? Or what is the difference between the two of them? See? So see, theory is something which cannot be explained to everyone. ठीक है, you as a potential PhD person, आपको पता होगा चीजें. You can actually differentiate between theories, between schools of thoughts and all. What about the layman, जिससे हमको वोट निकाल लें, जिनको हमको मोबिलाइज करना है for some social movement and all? What about them? So ideology actually tones down these theories, tone down these concepts in the language of commoners. In the language of commoners. Ideology का objective क्या होता है? Basically it is done for political mobilization. ठीक, तो ग्रामसी क्या बोलता है? इसलिए everybody is an intellectual, every human being is an intellectual. Got it? That means what? सब कोई कॉमन टर्म्स में आइडियोलॉजी समझ सकते हैं, सब कोई आइडियोलॉजी बना सकते हैं, सब कोई आइडियोलॉजी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनने की शक्ति रखते हैं. दे हैव द कैपेसिटी टू बिकम वन लाइक एन इंटेलेक्चुअल. ठीक है, व्हाई दिस इज वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम? बिकॉज ही वांट्स टू मोबिलाइज, मेक पीपल अवेयर दैट वॉट एवर वर्क यू डू, every kind of work, even the most simple manual thing, will involve some kind of thinking. So everybody is an intellectual. Got it? Everybody can think, everybody has ideas. हाँ, वो अलग बात है कि सब कोई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं होते एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स अगेन विल कम इन ग्रामसी.
I'm just linking that theory is something which cannot be a domain of everybody to understand too. Therefore, अगर आप इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हो, ultimately you have to go for political mobilization. Ultimately you have to ensure that you have people for social movement, for your political party, or whatever change you want to bring in society. And therefore you need to tone it down, you need to normalize it, you need to simplify it, and ideology is exactly what it does. And then when we'll come to ideology chapter, there are multiple ideologies. Then in ideology, one prominent question that will come up is, do we actually need ideologies today? Are ideologies different today? एक वो अपने आप में क्वेश्चन है. तो जो एक वेरी फेमस sociology scholar Anthony Giddens, he will say what? That in a globalized world, ideology does not matter at much, especially the old economic ideologies like liberalism, Marxism, socialism, etc. There might be a few ideologies which are important, which are based on your identity. Got it? क्योंकि आज की डेट में मोबिलाइजेशन आपकी आइडेंटिटी पर होता है. Got it? So this is why अभी thinkers करके when we'll move to ideology, we will have to have some understanding that why we are doing ideology. Got it? Now, moving on, first of all, we will start with Socrates. Okay? आपके सिलेबस में Socrates नहीं है, but we can't do justice to Plato if we do not know anything about Socrates. Got it. Now, there is some debate also that is there anybody like Socrates or not? क्योंकि what happened is we don't have any written records, or we don't have any writings of Socrates. Socrates has not written about his thoughts. क्योंकि Socrates क्या थे? Socrates was the philosopher of Agora. ठीक, Agora मतलब symposium or mall kind of thing, and you keep moving from one place to another. तो Socrates कभी एक जगह बैठते नहीं थे. Got it? And therefore he has not written, or he has not crystallized his thought in some one book. Say for example, Plato के इतने dialogues हैं, and we get to know about all his thoughts in different dialogues. So one reason is, now this यहाँ से एक question बन सकता है कि Socrates, we do not know much about Socrates, or assertion is that there is no written writing of Socrates. तो ये true है कि false है? True है. But why? What is the reason behind it? Because he was the philosopher of Agora. आप इसीलिए देखो कि इन्होंने कभी कोई स्कूल नहीं बनाई फिलोसफी की, but Plato establishes the first ever school of philosophy, academy. ठीक, और ये सिलसिला कौन कंटिन्यू करेगा? एरिस्टोटल. ठीक है, उनकी स्कूल का नाम क्या है? लाइसियम. ठीक, तो प्लेटो की ये, अगेन दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर नेट. ठीक है, तो प्लेटो इज द फर्स्ट पर्सन एस्टैब्लिशिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्कूल, सर्टेन काइंड ऑफ एकेडमी, जिसमें मल्टीपल थॉट्स जो हैं और मल्टीपल फिलोसफी, मल्टीपल ट्रेंड्स, सब कुछ डिस्कस होता था. एंड एरिस्टोटल कंटिन्यूड विद दैट इन द फॉर्म ऑफ लाइसियम. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? एज आई एम टेलिंग यू दैट बहुत सालों तक, इवन आफ्टर एरिस्टोटल, टिल द डिमाइज ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तब तक इन स्कूल्स में दे यूज्ड टू बी डिबेट्स, multiple thought process and all, सब चीज चल रहा है, they are debating lot of issues. But with the decline of Roman Empire and the death of Alexander the Great,
आप देखते हो इमर्जेंस ऑफ अनदर काइंड ऑफ फिलॉसफी, उसमें वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एग्रीगेट ऑल दीज डिबेट्स इनटू सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो ने जितना बताया, जितने आइडियाज दिए, वहां से डेवलप होता है प्लेटोनिज्म। ठीक, तो प्लेटोनिज्म इज नॉट व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम्स इन द एंशिएंट ग्रीस टाइम्स एंड ऑल, दैट इज नॉट प्लेटोनिज्म। Platonism as a school of thought is coming very late on, especially after the demise of Alexander the Great. Got it? और आगे जाकर के फिर से जब प्लेटोनिज्म या प्लेटोनिक थॉट्स में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसे बोला जाता है नियो प्लेटोनिज्म। नियो प्लेटोनिज्म। ठीक, सो can we say that Platonic thought and Platonism is one and the same thing? No, they are different. क्यों different है? एक तो टाइम पीरियड का भी डिफरेंट है, दूसरा this is more an aggregate view. They are trying to understand only the essence and they are trying to settle various debates in these thought process. ठीक है, तो Platonic thought is different from Platonism and Neoplatonism. Neoplatonism is simply the emergence of Platonism. People again showing interest, the revival of interest in the Platonic ideas and all. Got it? तो ये तीन शब्द आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आई वॉज सेइंग दैट डू वी नो अबाउट सॉक्रेटिस और नॉट। ठीक है, देयर इज अ डिबेट, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स बोलते हैं कि प्लेटो खुद ही सॉक्रेटिस था। ठीक है, एंड सॉक्रेटिस इज द मेन कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ हिज डायलॉग्स। ठीक है, अच्छा टेल मी, in which dialogue we do not find Socrates at all? In which dialogue we do not find Socrates at all? Last dialogue of Plato, last work of Plato, Laws. Got it? Laws में आपका Socrates absent है। ठीक है, again one big fact for your net GRF. Got it? Now coming back to that, do we know about Socrates? So as I told you that it's difficult to say with certainty because he was a philosopher of Agora, but we do find some authentic sources, especially some comedies were written during the time of Socrates itself. तो Socrates के कुछ contemporaries हैं and they have mentioned about Socrates in their comedies. The three prominent being, one is by Aristophanes. ठीक है, इसने 3 कॉमेडीज लिखी हैं, क्लाउड्स टू, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स। गॉट इट? तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, एरिस्टोफेन्स, एंड हिज कॉमेडीज आर नोन एज क्लाउड्स टू, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स। गॉट इट? नाउ सेकेंड अकाउंट where we get to know something about Socrates is Xenophon's Memorabilia. Got it? Xenophon's Memorabilia. Now in that there is a very famous story, the story of choice of Heracles. Okay? The story of choice of Heracles. Now what is the story? Again, he's a great king. So he's going somewhere and he comes across 2 women. ठीक है, एक women जो है very beautiful, very pompous and very enticing, other being very average looking and she does not have much to offer,
बट शी इज टॉकिंग सेंस. गॉट इट. तो एक लेडी जो है रिप्रेजेंट कर रही है वाइस और सेकेंड लेडी इज रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू. नाउ they both are trying to convince, this vice is trying to convince her to Heracles to choose this path rather than this path. Choose this path rather than this path. Got it? तो यहाँ पे actually why you have to choose certain path? क्योंकि यहीं से हम सोक्रेटिस की जो आप बोल सकते हो द डोमिनेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, वर्च्यू इज नॉलेज या एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. तो इसमें थियरी ऑफ नॉलेज हम देख रहे हैं सोक्रेटिस की, वेयर ही इज पुटिंग नॉलेज टू सच अ पेडेस्टल दैट फॉर हिम हैप्पीनेस, गुड लाइफ, everything is determined by the knowledge of that thing. So you can't have a good life unless and until you don't know, or you don't have any idea about what constitutes good life. Got it? यहाँ पर through this theory, तो यहाँ पे थ्रू दिस स्टोरी, यहाँ पे ये स्टोरी जेनोफोन जो है वो सुना रहा है एंड उसमें वो ये बता रहा है कि सोक्रेटिस इज टॉकिंग अबाउट सच अ स्टोरी to one of his friends. ठीक, इसको आप लिख सकते हैं. ये जो स्टोरी है चॉइस ऑफ हेरेकल्स, ये सोक्रेट जो है अपने फ्रेंड एरिस्टिपस को सुना रहा है. ठीक है, तो टू रिमेंबर दीज टू नेम्स, एरिस्टिपस. Socrates is telling this story to his friend Aristippus and Xenophon इसका अकाउंट दे रहा है. Got it? तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, you should just know there is one story, choice of Heracles, and in that we get a first hand account, or we get to know something about Socrates and why in ancient thought, in Greek thought, happiness is such an important thing. ठीक है, तो ये वहां से आ रहा है, हमको जानने को मिल रहा है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग अबाउट समथिंग टू नो अबाउट सोक्रेटिस. फर्स्ट फ्रॉम कॉमेडीज बाय एरिस्टोफेन्स. 3 कॉमेडीज हैं, क्लाउड, 2 बर्ड्स एंड फ्रॉक्स. ठीक है, एंड जो एक्चुअली कोई अगर टेक्स्ट है जो सोक्रेटिस की लाइफ टाइम का है, उनके कंटेम्प्रेरीज का है, तो वो है. सेकेंड, वी गेट सम अकाउंट इन जेनोफोन्स मेमोरेबलिया वेयर वी get to know about one story of choice of Heracles, जो कि सोक्रेटिस अपने दोस्त को सुना रहे हैं, and Xenophon is describing this. Got it? Now, in Plato also, we get to know about Socrates in many dialogues. Got it? इसमें से ये आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि Socrates was given poison, hemlock दिया गया था उनको, and what was alleged against him, first impiety, मतलब गॉड. ये भी एक क्वेश्चन पोटेंशियल बन सकता है कि सोक्रेट्स पे क्या इल्जाम लगाया गया. फर्स्ट इज impiety, got it, and other being that he is adulterating the young mind. Adulterating the young minds. What is impiety? Impiety is challenging God, कि God नहीं होता है या ये सब. ठीक है, तो Plato, although Plato is more concerned with ethics, politics and all, but in Plato we see some ideas on theology as well. ठीक है, तो theology में we are getting his views pertaining to religion and all. हालांकि बहुत क्वेश्चन आया नहीं अभी नेट में इन सब पर, बट वी शुड एटलीस्ट नो
कि थियोलॉजी के आइडियाज प्लेटो के कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलते हैं। नाउ व्हेन वी सी प्लेटोज थियोलॉजी, ही इज नॉट प्रमोटिंग मोनोथिज्म, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि गॉड है, बट ही बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ गॉड्स, ठीक है। दूसरा, फॉर प्लेटो गॉड इज नथिंग बट इंटेलिजेंस, ठीक है, एनीथिंग विच ब्रिंग्स ऑर्डर इन सोसाइटी वो गॉड है, ठीक है। और गॉड के लिए वो एक शब्द यूज करते हैं, या इंटेलिजेंस के लिए एक शब्द यूज करते हैं, नोस, NOUS, ठीक है। तो दिस इज प्लेटोज व्यू ऑन थियोलॉजी। आप देख रहे हो कि कैसे एंशियंट थॉट में कहीं ना कहीं थियोलॉजी के चलते या रिलीजन के चलते, गॉड के चलते, सोक्रेटिस वाज सैक्रिफाइस्ड। तो उस पर दो चार्जेस लगे थे, इम्पाइटी एंड एडल्टरिंग यंग माइंड। नाउ व्हाई वी आर सीइंग इम्पाइटी? क्योंकि लॉज में जो लास्ट बुक है प्लेटो की, दे हैव ट्राइड टू काउंटर। तो लॉज में प्लेटो बेसिकली किस किस लेवल की इम्पाइटी जस्टिफाइड नहीं होती है, उन सब की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो एथीज्म, थीज्म, ऐसे सिस्टम्स की बात करेगा जिनमें प्रॉब्लम है। वी विल सी व्हाट आर दे, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग दैट सोक्रेटिस पे दो चार्जेस लगते हैं, वन ऑफ इम्पाइटी एंड अदर ऑफ एडल्टरिंग यंग माइंड्स, ठीक है। इम्पाइटी से हम लिंक कर सकते हैं आइडियाज ऑफ थियोलॉजी विच वी फाइंड इन प्लेटोज वर्क। In Plato's work, when we talk about ideas on God and all, Plato is not generally promoting monotheism, but he generally believes in the unity of gods. And when he say gods, उनका ज़्यादा functional view देख रहा है वो, and he thinks that God is more about intelligence, ठीक है, जिसके लिए वो शब्द यूज करता है नोस, NOUS, नोस। ये सब प्लीज याद रखिए, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन योर नेट GRF where they were asked that what was justice called in your ancient Greek thought, ठीक है, डायकोनस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस, नोस, इंटेलिजेंस से मतलब एनीबडी विच ब्रिंग्स कीप थिंग्स इन ऑर्डर, यही तो सारा टेंशन जस्टिस का है, रिपब्लिक का है, चीजों को ऑर्डर में रखना, साइकिक हार्मनी की बात करता है वो। गॉट इट? सो दिस इज अनदर आइडिया। नाउ सोक्रेटिस कब मरा, या all the scenes or dialogues vis-a-vis his trial and death that can be found in three prominent dialogues. पहला है यूथिफ्रो, ठीक है, यूथिफ्रो। Here, see, Socrates is on his way to trial for impiety and corrupting the young mind, ठीक है। तो यूथ्रीफो में सोक्रेट्स का आपको वो जा रहा है ट्रायल के लिए, वो देखने को मिलता है, ठीक है। एपोलॉजी में ट्रायल एंड कन्विक्शन दिखता है। गॉट इट? सो देयर इज अ क्वेश्चन अगेन इन योर नेट GRF कि एपोलॉजी में डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? तो डायलॉग हो रहा है बिटवीन सोक्रेट्स एंड जो उसको कन्विक्ट करवा रहे हैं। गॉट इट? तो एपोलॉजी में देयर इज अ डिटेल्ड ट्रायल व्हिच इज गोइंग ऑन। देन लास्ट, Crito describes one of his days in prison after he was convicted, ठीक है। And the last one is Phaedo describes his last day and his death. ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। Got it? Repeating again, Euthyphro, Socrates on his way for trial. Apology describes his trial and conviction. जब apology हो गई, Crito describes one of his days in prison. And last, Phaedo describes his last day and his death. तो ये सीक्वेंसिंग में आपको अरेंज करने के लिए बोल सकता है, that with regard to Socrates trial and all, arrange in ascending or descending order, ठीक है। Now, these are some facts vis-a-vis Socrates. Got it? Now, we will come to some basic ideas, ठीक है। तो सोक्रेटिस के दो प्रोमिनेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। An unexamined life
is not worth living, an unexamined life is not worth living. And second is virtue is knowledge. Second is virtue is knowledge. ठीक है. Now, what is virtue here? Excellence. ठीक. Why do you need excellence? To lead a good life. ठीक. Why do you need to have a good life? Because man seeks happiness. ठीक. बट हैप्पीनेस सीख करने के लिए आपको कोई नॉलेज भी तो होना चाहिए. कैसी गुड लाइफ चाहिए आपको, किस टाइप की गुड लाइफ चाहिए. जब तक आपको यू डोंट नो what to do, how to attain good life, you don't have any knowledge with that, how are you going to pursue that? This statement, virtue is knowledge, is basically telling about that knowledge is all that you need to lead a good life. ठीक है. And good life means what? Happiness. Now, एक subtle distinction है यहाँ पे. जो ancient thought है, it talks about happiness, good life. लेकिन मॉडर्न थॉट भी इसके बारे में बात करता है. फॉर एग्जाम्पल मिल एंड बेंथम दोनों यूटिलिटेरियंस हैं. दे टॉक अबाउट हैप्पीनेस. बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंशियंट और द सोक्रेटिक डिक्शन ऑफ हैप्पीनेस और द सोक्रेटिक व्यू ऑफ हैप्पीनेस एंड द मॉडर्न द यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस? देखिए, बहुत माइनर डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. जो एंशियंट थॉट में द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है वो ओवर आर्चिंग है. ठीक है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ हैप्पीनेस कि आज आपने एप्पल फोन खरीदा और आप हैप्पी हो गए, आज आपने मूवी देखी आप हैप्पी हो गए. नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलरिस्टिक इंस्टेंसेस ऑफ हैप्पीनेस. They are talking about how to lead a life. वो broader view देख रहे हैं. Organic view of happiness, whole view of happiness, not a particularistic view of happiness. Got it? तो utilitarian tradition जो है या modern tradition है वो happiness को बहुत particularistic way में देखता है, step by step process, not in a holistic manner. पर ये जो ancient thought है, this is talking about the holistic happiness, and that is why they use a very specific term for this, eudaimonia. ठीक है. I have, ठीक है, eudaimonia. ठीक है. और eudaimonia का जो शब्द हमको उनके ग्रीक थॉट में मिलता है उसको हम बोलते हैं eupratin. ठीक है. ये भी याद रखेंगे. So see, eudaimonia is a property of life, not something fleeting. तो जो यूटिलिटेरियंस जो जिस हैप्पीनेस की बात करते हैं दैट इज अ वेरी फ्लीटिंग हैप्पीनेस, मोमेंटरी हैप्पीनेस, बट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. गॉट इट? तो नॉलेज, हैप्पीनेस, दैट इज ऑल लिंक्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्च्यू इज नॉलेज. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट eudaimonia, we find two kinds of eudaimonia in the Socratic thought. ठीक है. एक है रैशनल यूडाइमोनिज्म एंड अदर इज योर साइकोलॉजिकल यूडाइमोनिज्म. ठीक है. अब ये दोनों बहुत लिंक्ड हैं बट बहुत सटल डिफरेंस है इनमें. ठीक है. एक क्या कह रहा है रैशनल यूडाइमोनिज्म, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग. ठीक है. व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड डूइंग समथिंग. अगर मैं पानी पी रहा हूं, क्या पानी पीना वर्थ इट है? ठीक है. तो द क्वेश्चन इज why is X worth pursuing? Why is drinking water worth it? ठीक है. तो ये rationality, what is the reason behind doing this? ठीक है. This is rational eudaimonia. Second is psychological eudaimonia कि why did you do it? आपने पानी क्यों पिया ultimately? क्योंकि इससे मुझे happiness मिली. Got it? So see, these are very cyclic arguments.
but you should understand that in Socrates we find both kind of eudaimonism. One, rational eudaimonism, which is actually asking what is the reason behind doing something, ठीक है, and second is आपने कुछ कर लिया तो उससे आपको कुछ तो मिला, that is psychological eudaimonism, ठीक है. तो rational eudaimonism actually asks the question why is X worth pursuing. तो आंसर है happiness provides the only ultimate justifying reason for doing something. It is the ultimate answer to the question why is X worth pursuing, ठीक है. And then we talk about psychological eudaimonism. It is actually saying what, that I did this because it was giving me happiness. Got it. तो आपको दोनों ट्रेंड मिलेगा सॉक्रेटिक ट्रेडिशन में, और इसी बट फोकस ज्यादा साइकोलॉजिकल यूडाइमोनिज्म में है, बट यू विल फाइंड बोथ काइंड्स ऑफ यूडाइमोनिज्म. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर. तो यूडाइमोनिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, एंड this is not something momentary or fleeting, and that is the main difference between when ancient thought talks about happiness and when the utilitarians talk about it, ठीक है. और ये टर्म याद रखेंगे, यू प्रैटन. गॉट इट. Now, why I am coming to this term also eudaimonia? Because again, it is related to one more concept in ancient thought or Socratic thought में, known as acrasia. Acrasia. Got it? Now, when I say acrasia, it means what? Weakness of will. Weakness of will. Now, when you will read Socrates, he will say that man generally does some wrong thing or crime or anything out of ignorance, ठीक है. उनकी सोल को ही नहीं पता है कि ट्रू नॉलेज क्या है, उनकी सोल को ही नहीं पता है that they are doing something wrong, and that is why they are indulging in some wrong activity because they don't know about it, ठीक है. तो जो सोक्रेटिस है वो ये डिनाई कर रहा है कि आप इनहेरेंटली गंदे हो इसलिए कोई गंदा काम कर रहे हो, ठीक है. तो सोक्रेटिस डिनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रेसिया और द वीकनेस ऑफ द विल, ठीक है. सोक्रेटिस विल से आप कोई बुरा काम इनहेरेंटली नहीं करते हो, आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आपको पहले से ही इच्छा नहीं होगी कोई गंदा काम करने की. यू डू इट बिकॉज यू आर इग्नोरेंट, यू डू इट बिकॉज यू डोंट हैव ट्रू नॉलेज. गॉट इट. तो इसी को बोलते हैं एक्रेसिया, वीकनेस ऑफ विल. गॉट इट. जिसमें कि ये अंडरस्टूड है कि आदमी, if somebody is indulging in some wrong work, they are not doing willingly, ठीक है. They are doing such thing because they don't have actual knowledge about it. They don't know exactly that they are indulging in something of that sort. Got it? तो ये है आपका concept of acrasia and Plato denies it, ठीक है. इसीलिए आप देखो ये जो हमने देखा यूडाइमोनिज्म, जहाँ पे हमने साइकोलॉजिकल एंड रैशनल यूडाइमोनिया की बात की, ये भी एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है वहां से, आप इग्नोरेंट थे, एंड द मोमेंट यू गेट द ट्रू नॉलेज तो आप कभी वो एक्ट नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आपके पास दो क्वेश्चन उठेंगे, व्हाई इज एक्स वर्थ परसुइंग एंड व्हाई डिड यू डू एक्स, ठीक है. तो जब आप इग्नोरेंट थे तो आपके इन सब के आंसर्स अलग थे, बट एज अ रैशनलिस्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन यू स्टार्ट परसुइंग यूडाइमोनिया, आपको जब ये क्वेश्चन, आपको फिर ट्रू नॉलेज मिलेगा, एंड देन यू विल नॉट इंडल्ज इन क्राइम. तो इसीलिए प्लेटो क्या सजेस्ट करेगा? पनिशमेंट सजेस्ट करेगा इविल्स के लिए या रिफॉर्म? ही विल सजेस्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, काइंड ऑफ रिफॉर्मेटरी जस्टिस. तो प्रेजेंट टाइम्स में गांधी ने ऐसी सब बात की है, ठीक है, ओपन जेल्स एंड ऑल, ठीक है, रिफॉर्म एंड ऑल, ठीक. नाउ आई होप ये कुछ नई चीजें हैं आपकी. नाउ अगेन वी से दैट
Socrates did not write much about his thought process and all, but still he's famous, and we know his student Plato and all, जो आगे जाके Platonism में develop होता है. But then there are certain other schools as well which are inspired by Socrates, some philosophers who are inspired by Socrates. One is Aristippus of Cyrene. अब मुझे आप ये बताइए, जब आप ये Aristippus of Cyrene, तो साइरीन ये सब क्या है? See, generally in Greek thought there was a trend कि जो थिंकर होता था वो अपने नाम से भी जाना जाता था, अपने पिताजी का भी नाम लगाता था और अपने डिस्ट्रिक्ट या गांव का भी नाम लगाता था. ठीक है, इंडिया में भी चलता है ये, अब नहीं लगाते, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बट ये अगर आपको दिख रहा है तो ये वहाँ का ट्रेंड है ऐसे नाम लगाने का. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग, जस्ट रिमेंबर फर्स्ट इज एरिस्टिपस. एरिस्टिपस इज फाउंडर ऑफ हेडोनिज्म. एरिस्टिपस कौन थे? अभी हमने किया था, ही वॉज फ्रेंड ऑफ सोक्रेटिस. ठीक है, तो जेनोफोन जो है मेमोरेबलिया में द स्टोरी ऑफ हेरिकल्स बता रहा है, इन्हीं को बता रहा है. ठीक है, तो एरिस्टिपस, ही इज द फाउंडर ऑफ हेडोनिज्म, एंड हेडोनिज्म इज व्हाट, दैट आवर एम शुड बी प्लेजर ओनली, जैसे इंडियन फिलॉसफी में चार्वाक. ठीक है, तो वो यहीं से आ रहा है. सेकेंड, एंटिस्थेनीस, ही इज फाउंडर ऑफ सिनिसिज्म, द आइडिया दैट आवर नीड शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये दो लोग जो हैं अपार्ट फ्रॉम प्लेटो, हु गेट इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ सोक्रेटिस एंड दे स्टार्ट देयर ओन स्कूल. ठीक है, now I'll come back again to Socrates. Okay, now knowledge is virtue. अब ये स्टेटमेंट या एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये स्टेटमेंट दे ही क्यों रहा होगा? Why would anybody give this kind of statement? क्योंकि ड्यूरिंग Socrates टाइम there were another schools of thought, yeah, another bunch of people who were known as sophists. Got it? And sophists जो थे वो, they were that kind of teachers who were very ear pleasing to the students. तो वो ये बता रहे थे जो बच्चे सुनना चाहते थे कि money is good, power is good, lust is good, material world is better and all, या man's understanding is limited and all, तो you can't chase the true knowledge, you can't chase the perfection and all. तो ऐसी सब बातें बताते थे. लेकिन सॉक्रेट जो है, he is questioning their belief system, he is questioning their interpretation of knowledge, and Socrates will say that sophists themselves are ignorant, they don't have actual knowledge, उनको पता ही नहीं है ट्रू नॉलेज क्या होता है. ठीक है, तो with his theory of knowledge he is chasing real knowledge. And what is real knowledge? Real knowledge is about those things which are essence, which are conceptual, which are definitional, जो चीज बदलती नहीं है. ठीक है, तो it is internal, and what sophists are telling, that is just an illusion of knowledge, very superficial thing. क्यों? money, power, lust, etc. this is momentary, आज है कल नहीं है, आज किसी की प्रॉपर्टी है कल किसी की प्रॉपर्टी है. तो are they essence, are they non changing? No, they are not non changing. ठीक है, they are momentary, they are fleeting. And as I told you, eudaimonia seeks what? Eudaimonia seeks those things which remain for the longer period of time, which do not fleet, which do not run away. तो यहाँ पे वो सोफिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपका जो बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है वो रॉन्ग है, वो इल्यूजनरी है. एंड सोफिस्ट्स आर फोकसिंग मोर ऑन व्हाट? मैटर, मनी, इम्परफेक्ट थिंग्स. तो ये सोक्रेटिस कह रहा है दिस इज नॉट ट्रू नॉलेज. चेज ट्रू नॉलेज विच इज आइडिया, परफेक्शन, कॉन्सेप्चुअल, डेफिनेशनल. ठीक है, और इनको समझने के लिए सोक्रेटिस डेवलप्ड हिज ओन मेथड. ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं इलेंकस, ELENCHUS। ठीक, अब इलेंकस भी अब यू शुड नो कि वेयर डू वी गेट सोक्रेटिक मेथड ऑफ इलेंकस, किस डायलॉग में? तो यूथिफ्रो, जहां पर हमें इलेंक्टिक डायलॉग मिलता है। तो इसमें क्या करता है सोक्रेटिस, सामने वाले को बोलने देता है। वंस सामने वाला हैज फिनिश्ड, he will try to cross examine that person, but Socrates will never give the final answer. Got it? तो इसी को हम बोलते हैं इक्लेक्टिक मेथड, इलेंकस मेथड। एंड his Elencus method, Socratic Elencus method, you find in a dialogue known as Euthyphro। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, Euthyphro। Now, since we have talked about sophists, we should know something about sophists as well। ठीक है, तो sophists जो थे, they were teaching what? They were teaching rhetoric, कि how to come to power, story create करके, narration create करके, how to come to power। ठीक है, and there are these were some intellectuals around 5th century BC। they were contemporaries of Socrates, and although Plato has criticized them, but he has also immortalized them। क्योंकि हम Socratic थॉट तब तक नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, टिल द टाइम वी नो अबाउट सोफिस्ट। ठीक है, तो सम प्रोमिनेंट सोफिस्ट जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, दे आर एब्डेरा, हिपियास, गॉर्जियास एंड प्रोडिकस। ठीक है, इनमें से एक और हैं आपके प्रोटागोरस, प्रोटागोरस। ठीक है, वन मोर इज प्रोटागोरस। ठीक, अब देखो, एक थ्रेसीमैकस भी है, जो जस्टिस में डायलॉग, जब हम रिपब्लिक देखेंगे प्लेटो की, तो उसमें देयर इज अ डायलॉग, उसमें ये चल रहा है। ठीक है, नाउ generally there is a very negative thought about sophist। ठीक है, for example there are a few statements मैंने अलग से कर दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो who calls sophists as half professors and half journalist? बार्कर ने बोला है ये। ठीक है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनका ज्ञान ही सब आधा अधूरा था, ये इधर की उधर ज्यादा कर रहे थे, इनको जर्नलिस्ट बोल दिया गया। ठीक है, सेकेंडली who says sophists had no philosophy? सेबाइन। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है प्रोटागोरस का, क्योंकि प्रोटागोरस is generally understood to have given the idea of relativism। He has given the idea of relativism। अच्छा, one more thing, always keep a pen copy with you, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर चीज़, although we try to put everything on notes, but थोड़ा सा अपना भी एक running वो linkages आप लिखते रहें, if you are comfortable with that, at least jot down the key terms। Got it? So Sabine is saying what? That sophists actually have no philosophy at all। उनकी कोई thesis नहीं है, उनकी कोई philosophy नहीं है, सब half vague knowledge जो है इधर बांट रहे हैं। ठीक है, this is what he's saying। But there is one exception, Protagoras, who is known for his concept of relativism। Now what is relativism? What is relativism? So relativism says that there cannot be any universal truth। ठीक है, truth varies from person to person, और ट्रुथ जो है वो उस पर्सन तक ही सीमित है। द मोमेंट यू टेल ट्रुथ टू समबडी एल्स, ट्रुथ विल चेंज फॉर दैट पर्सन।
ठीक है, तो ट्रुथ इज रिलेटिव, यू कांट चेज यूनिवर्सल थिंग्स। प्लेटो जो है इसको काउंटर करेंगे प्रोटैगोरस को, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविज्म, इन वन ऑफ हिज डायलॉग नोन एज थोइटेटस। ठीक है, who will counter this relativism? Plato, again in his dialogue, in his dialogue Theaetetus। ठीक है, तो in which dialogue Plato refutes or Plato counters relativism of Protagoras, Theaetetus। Got it? तो एक ये एक्सेप्शन बस आपको याद रखना है। तो जनरली सोफिस्ट्स आर कंसीडर दैट दे हैड नो फिलॉसफी। ठीक है, देन अगेन who describes sophists as private tutors in rhetorics, argumentation and eloquence। ठीक है, कि ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, रेटरिक सिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैक्सी। ठीक है, मैक्सी। You should remember these three: half professor, half journalist, Barker. Sophist had no philosophy, Sabine. Exception, Protagoras. Protagoras is giving the theory of relativism, जो कि प्लेटो काउंटर करेंगे थेटेटस में। ठीक है, एंड लास्ट सोफिस्ट एज प्राइवेट ट्यूटर्स इन rhetorics, argumentation and eloquence. That is a statement, or it is a description by Maxey। अब जो इलंकस का मेथड है क्रॉस एग्जामिनेशन का, confusing people and not giving final answers and all, ये आगे जाकर के प्लेटो and all they will develop into dialectics। बट अगर मान लो क्वेश्चन आता है नेट जीआरएफ में और सॉक्रेटिस भी दिया होता है वहां पे ऑप्शन चूज करने को, तो गो विथ सॉक्रेटिस ओनली। गॉट इट? बिकॉज कहीं ना कहीं एलंकस में आपको डायलेक्टिक्स मिलेगा। गॉट इट? नाउ बिकॉज ऑफ हिज method of Ilankas and dialectics, that means not telling the truth or not giving the final answer, just using your cross examination, your questions to irritate people, इसीलिए सोक्रेटिस को गैट फ्लाई भी बोला जाता था। ठीक है, गैट फ्लाई। ठीक, गैट फ्लाई। ठीक है, so ultimately Socrates was killed, he was given hemlock to drink, and he never revolted against state, and since he died in a democracy, Plato will develop a hate for democracy। ठीक है, हालांकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि when Plato was born in Athenian democracy, when Athenian democracy was at its golden period। ठीक है, उसको बोला जाता है एज ऑफ पेरिकल्स, एज ऑफ पेरिकल्स, which actually mean the golden age for Athens। और उसके बाद से एथेंस कभी वो एज नहीं देख पाया, कभी वो परफेक्ट राम राज्य नहीं देख पाया। गॉट इट? तो see this paradox that Plato is getting birth in the peak of Athenian city state, but while he grows up, Athens का थोड़ा सा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, and eventually he will start hating the democracy of Athens। ठीक है, and that is why Plato के आइडिया में जब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टेट्स या द लाइफ साइकिल ऑफ रूलिंग सिस्टम, ठीक है, डेमोक्रेसी, आपकी ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड द राइज ऑफ फिलोसफर किंग एंड ऑल, वो सब यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सोक्रेटिस, बिकॉज ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, मतलब दिस इज व्हाट प्लेटो बिलीव, ही वाज किल्ड। गॉट इट? सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सोक्रेटिस। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है कि लॉज, जो प्लेटो का लास्ट डायलॉग है, उसमें सोक्रेटिस इज एब्सेंट। गॉट इट? Now we will move on to the main thinker
प्लेटो। ठीक, आई होप दीज मेनी फैक्ट्स आर सफिशिएंट, यू विल कीप गेटिंग हियर एंड देयर, टेस्ट वेस्ट में मिलते रहेंगे, बट आई थिंक अभी के लिए इतना आप डाइजेस्ट करो, मोर देन सफिशिएंट है। यू विल गेट द हैंड आउट्स ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्लेटो, देयर इज सम इशू, हाँ आ गया, ठीक। नाउ सी, आई हैव गिवन दिस that Plato was born in age of Pericles, also known as Golden Age of Athens. तो पेरिकल उस समय के वहां के किंग थे जब एथेंस में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। एंड पेरिकल क्या करते थे, सिटीजन्स को भी मौका देते थे टू पार्टिसिपेट एंड ऑल, एंड दे वर जूरी ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर फंक्शनिंग, बट देन during lifetime of Plato only, Athens starts declining. And it is a very interesting fact that Plato comes from aristocratic class and Plato wanted to join politics. But this one incident where Socrates was given hemlock and he died changed the whole journey, and Plato chose to leave politics and do philosophy to understand that why Athens is in such a bad shape, ठीक है। तो वो आपको पैराडॉक्स यहाँ पे समझना है कि वो पीक पे पैदा हो रहा है एथेंस के, नोन एज एज ऑफ पेरिकल्स और द गोल्डन एज ऑफ एथेंस, एंड देन इवेंचुअली he finds himself that Athens is declining. Now, इसीलिए द मेन डायलॉग प्लेटो का जो है वो मेजरली आपको मिलता है रिपब्लिक में, वेयर ही इज ट्राइंग टू मेक एथेंस ग्रेट अगेन, ठीक है। और ग्रेट या आइडियल स्टेट क्या होगा, जहां पे जस्टिस होगा। तो देयरफॉर जस्टिस इज अ काइंड ऑफ कॉमन थ्रेड इन प्लेटोज फिलॉसफी, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड प्लेटो। हम प्लेटो के मेजर आइडियाज रिपब्लिक में वी कैन फाइंड, एंड हियर his prominent theory is theory of justice, theory of justice, and through this he wants to create an ideal state, he wants to create an ideal state. Now इस आइडियल स्टेट का नाम क्या है, अगेन दिस इज अ फैक्ट, what this ideal state is known as. This ideal state is known as Callipolis. Please write it, jot it down. Callipolis. Callipolis. ठीक, ये हम क्यों नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्लेटो का लास्ट वर्क देखेंगे लॉस, ठीक, तो वहां पे जो जिस सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये बात कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज मैग्नीशिया, ठीक। और दोनों में बहुत कंट्रास्ट मिलेंगे आपको, विच आई विल डिस्कस इवेंचुअली इन लॉस थोड़ा सा, ठीक है। वन इज मैग्नीशिया एंड अदर इज कैलिपोलिस। तो नेट में क्या क्वेश्चन आ सकता है, द आइडियल स्टेट विच एरिस्टोटल इमेजिन्स इन रिपब्लिक is known by which of the following names? Callipolis. Got it? So, Republic, theory of justice. By theory of justice, he is trying to create an ideal state. Why? Because Athens is in bad shape, and when Plato was born, he was born during the age of Pericles, which is known as the golden age of Athens. ठीक है? And जो ideal state वो बनाना चाह रहा है उसका नाम है Callipolis. Got it? Now,
जब आइडियल स्टेट की थियरी वो दे रहा है तो इससे ही रिलेटेड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट, you may say he's trying to create a continuity between the citizens and the nature of the state. ठीक है, तो जो भी सोक्रेटिक, प्लेटोनिक और एरिस्टोटेलियन थिंकिंग थी उसको नाम दिया जाता है गेस्टाल्टिक थिंकिंग, गेस्टाल्टिक अप्रोच और गेस्टाल्टिक थिंकिंग। ठीक है, ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है ये, बस नाम नहीं पता होगा आपको। गेस्टाल्टिक थिंकिंग इज व्हाट? whole is prior to individual or unit, whole is prior to individual or unit। ठीक है, that means what? whole is far greater than unit or individual, this is known as gestaltic thinking। ठीक, और ऐसा करने के लिए आपको हमेशा you will have to see the big picture, only then you can understand the micro picture, got it? तो इसी को हम बोलते हैं गेस्टाल्टिक अप्रोच। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, गेस्टाल्टिक अप्रोच बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। गॉट इट? तो ये हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी ये आइडियल स्टेट का कंसेप्शन दे रहा है प्लेटो, he will also bring in the unit elements into it, but at the end of the day, because his conception is gestaltic, because his conception is organic, वो दोनों को समझने के लिए ब्रॉड व्यू या मैक्रो नैरेटिव समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलता है, यदि एथेंस विच इज अ सिटी स्टेट, वहां अगर आइडियल स्टेट बनाना है, वहां जस्टिस लाना है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल्स हैं वही प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल के सोल में होंगे। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सोल। आप जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिज्म। ठीक, तो रिपब्लिक में भी व्हेन प्लेटो स्टार्ट ही स्टॉप, इनिशियल जो डायलॉग्स हैं, इनिशियल बुक्स हैं, उसमें ज्यादा मेंशन इंडिविजुअल का है। ठीक है, उनके सोल की बातें, उनके इंडिविजुअल्स की बातें, इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस की बातें, इंडिविजुअल की गुड लाइफ की बातें, बट इवेंचुअली फिर सिटी एंड स्टेट एंड उसकी बातें होंगी। गॉट इट? तो ये हमको एक चीज समझनी है। तो जो सिटी सोल कनेक्शन दिया है प्लेटो ने, सिटी सोल कनेक्शन, उसका मेन स्टेटमेंट क्या है प्लेटो का? स्टेट इज इंडिविजुअल writ large। See, I will go प्लेटो का एक एक थियरी डिटेल में, ठीक है, I'll explain, but I'm just trying to give you a broad framework कि प्लेटो को अंडरस्टैंड कैसे करना है। इतना अगर आप कर लोगे तो आपके बेसिक्स हो जाएंगे, एंड देन फैक्ट्स इधर उधर से फिर हम करते रहेंगे और। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, प्लेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? थियरी ऑफ जस्टिस, क्रिएटिंग एन आइडियल स्टेट, जिसको उसने नाम दिया है कैलीपोलिस। कैलीपोलिस should be understood in contradistinction to his last work laws, जहां पे वो मैग्नीशिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। तो जहां कैलीपोलिस इज एन यूटोपिया, ठीक है, जहां कैलीपोलिस इज एन यूटोपिया, मैग्नीशिया is not an utopia. Magnesia is something you may say practical approach. ठीक, मैग्नीशिया इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, वो सिटी स्टेट जो एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है। गॉट इट? नाउ दिस अप्रोच, गेस्टाल्टिक अप्रोच, आई होप यू अंडरस्टैंड, होल इज प्रायर टू इंडिविजुअल। ठीक है, इसका ब्रॉड स्टेटमेंट हमको कहाँ मिलता है? सिटी सोल का जो वो कंपैरिजन करना चाह रहा है, वी फाइंड इट इन स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। गॉट इट? तो ये भी गेस्टाल्टिक व्यू ही हो गया आपका। ठीक, तो
आइडियल स्टेट का ये सब जो थ्योरी दे रहा है प्लेटो, ठीक, उसके लिए ही गिव्स हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है, जिसको हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी बोल देते हैं, ठीक। इसी में आ जाती है आपकी द थ्योरी और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग लाइंस, व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग लाइंस एंड ऑल, ठीक। ये इंस्पायर कहां से हो रहा है, थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड ऑल, सोक्रेटिस के वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज, ठीक। अब जब ये सारा आइडिया मिल गया, सब चीजें हो गई, अब क्या करना है, क्या बोल रहा है आइडियल स्टेट क्या होगा, कैलिपोलिस में क्या होगा, जहां पर यू फाइंड अ फिलोसोफर किंग टू रूल, you find a philosopher king to rule, and philosopher king will have what, absolute powers, वो खुद ही दिमाग लगाएगा, इसके ऊपर कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, यू कांट काउंटर क्लेम ऑन नॉलेज ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है। तो जो मतलब एक स्टेटमेंट है कि यू कांट टेल द प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन दैट यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है, उसको बुक से भी ज्यादा नॉलेज है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि जब हम लॉज से कंपेयर करेंगे, प्लेटो गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक्चर्नल काउंसिल, ठीक, नॉक्टर्नल काउंसिल, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जेआरएफ में, दैट वेयर डू यू फाइंड द टर्म नॉक्टर्नल काउंसिल, ठीक। तो ये लॉज में मिलता है हमको नॉक्टर्नल काउंसिल, इसको नॉक्टर्नल क्यों बोल रहे हैं, आई विल कम बैक टू अगेन व्हेन आई विल डील विथ द इंडिविजुअल थ्रेड्स विद इन प्लेटो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव मेक यू इमेजिन, ठीक है। तो नॉक्टर्नल काउंसिल जो है, व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज नॉक्टर्नल, अगेन कैन कम इन एजर्शन रीजन, नॉक्टर्नल मतलब जो रात भर ना सोए, ठीक है। तो नॉक्टर्नल काउंसिल इज द काउंसिल ऑफ एल्डर पीपल, ठीक है, जो कि रात भर जगेंगे, बातें करेंगे, उनका कुछ काम होगा, इनका काम होगा लॉज देखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, हाउ टू चेंज देम एंड हाउ टू इंश्योर दैट फिलोसोफर किंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू दिस। आप देख रहे हो लॉज में फिलोसोफर किंग पर नॉक्टर्नल काउंसिल का एक चेक लग गया, रिपब्लिक में नहीं है, गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर थिंग, ठीक है। तो आई सेड फिलोसोफर किंग एब्सोल्यूट पावर्स, ठीक है। अब फिलोसोफर किंग को ढूंढोगे कैसे, हाउ विल यू फाइंड फिलोसोफर किंग, हाउ विल यू फाइंड फिलोसोफर किंग, तो he gives a very elaborate method known as theory of education, theory of education to find philosopher king, filtration process and all, ठीक है। Now once you have found philosopher king with absolute powers, Plato wants that करप्ट कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए in order to have a supplementary mechanism to check or to ensure that philosopher king does what he is meant to do, he will come up with a supplementary provision of communism, ठीक। and he will talk about two kinds of communism, communism of property and communism of family and wives, communism of family and wives,
and because of his ideas vis-a-vis women and all, which we generally find in book 5 of Republic. ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्लेटो को बहुत से स्कॉलर्स बोलते हैं ही वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, बिकॉज in his book 5 he is actually saying that only difference between male and female is that it is the male which begets the child and it is the women who bears the child. ठीक है, बस यही डिफरेंस है, उसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल, नो फंडामेंटल डिफरेंस इन द सोल ऑफ men and women. ठीक है, therefore women, there can be a philosopher queen as well. Women can also partake various works of the state and all. So that's why a lot of scholars believe that he was the first feminist. Got it? ये फेमिनिज्म के उनके आइडिया हमको उनकी बुक 5 रिपब्लिक में मिलते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस बुक 5, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, नाउ we have done his communism, theory of education and all, ये सब दे रहे हैं. Once he has given so much, इतना सारा उन्होंने बताया, इसीलिए प्लेटो के वर्क को एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है बाय इमर्सन. ठीक है, वी ऑल नो Yeah. Out of Plato come all things that are still written and debated among men of thought. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट स्टैंड अलोन भी आ सकता है कि when we have to understand the encyclopedic nature of Plato's work, we can always invoke R.W. Ralph Waldo Emerson, who says, out of Plato come all things that are still written and debated among men of thought. आप देखते हो रूसो ने भी आगे जा करके प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रेस किया है इन हिज बुक व्हाट, एमिली, EMILE. ठीक है, एंड इमर्सन का ऑब्वियसली देयर इज सेकंड स्टेटमेंट, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो. ठीक है, बट although on one side there are people who actually praise Plato, but on the other side there's a whole system, or there's some scholars, and the most prominent being Popper, who calls him the fascist or enemy of open society. ठीक है, he calls him first fascist, और इस कैटेगरी में वो other thinkers को भी रखता है, likes of Hegel and Marx. Got it? तो वो किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज करेगा, वो हम सब एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये भी आपका एक्चुअली पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिसिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय मेथोडोलॉजिकल होलिज्म एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट प्लेटो. एंड अगर आपको प्लेटो का एक माइंड मैप बनाना है, दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड माइंड मैप. प्लेटो, theory of justice, theory of ideas. ठीक है, इसमें हम बेसिकली देख सकते हैं सिटी सोल इक्विवेलेंस. ठीक, myth of metals. ठीक, अब theory of ideas से क्या निकलेगा, why do we need philosopher king. ठीक, how to find philosopher king, through an elaborate system of education. ठीक, but philosopher king might turn say corrupt or anything, so
we will go on to give communism of property, which will be actually criticized by Aristotle, and communism of family. Okay, because of this Plato is known as first feminist. Okay. That means there can be also a philosopher queen. Okay, they can also be a philosopher queen. But then, because of all his ideas, we will see some people who will criticize Plato, prominent being Karl Popper, but there are also who will praise him. ठीक है, for the likes of Barker and all, Whitehead और Levinson है एक तो praise में very prominent. Got it? So this should be your broad mind map to understand how we will go on for Plato. ठीक है? ठीक, अब we will move, we will start, I'll start थोड़ा सा आज, ठीक है? Now, what are the primary influences on Plato? What are the primary influences on Plato? ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सोक्रेटिस, ठीक है, उनके गुरु थे, एंड थ्रू हिम ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज थियरी ऑफ नॉलेज, जहाँ से थियरी ऑफ आइडिया आती है, और आइडिया की थियरी में सबसे प्रोमिनेंट स्टेटमेंट क्या है? रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज. आगे जाकर हीगल भी कुछ इस टाइप की बातें करेगा, बट और उसको ब्रॉड करेगा, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल जैसी बातें करेगा. ठीक है. सेकेंड इज हिराक्लिटस. ठीक है, एंड हिराक्लिटस का जो फेमस स्टेटमेंट है दैट वी कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम वाटर ट्वाइस. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. ठीक है, चेंज होता रहेगा. हिराक्लिटस का एक और स्टेटमेंट है, वॉर ब्रिंग्स चेंज. ठीक है, आप लिख सकते हो, वॉर ब्रिंग्स चेंज. वॉर ब्रिंग्स चेंज. यहाँ पे वॉर इज नॉट एग्जैक्टली वॉर, बट बेसिकली डिफिकल्टीज इन लाइफ. ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्शन से मूवमेंट आगे बढ़ता है, दिस एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, वॉर ब्रिंग्स चेंज. Now again, next influence is your Parmenides. ठीक है, तो Parmenides, as the name suggests, the truth reality is permanent, not change. ठीक है, and if change is the property of the world, then permanence is also the property of this world. और आपको ये पता होना चाहिए कि परमानाइडिस ने प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, तो परमानाइडिस हैज क्रिटिसाइज थियरी ऑफ फॉर्म्स गिवन बाय प्लेटो. ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथागोरस. ठीक है, तो पाइथागोरस जो थे वो मैथमेटिशियन थे. ठीक है, एंड प्लेटो जो है लॉजिक पाइथागोरस से सीख रहे हैं, और इट इज ऑल्सो सेड दैट इवन जो सोल का कंसेप्शन यूज किया गया है इन प्लेटोनिक थॉट, इन सोक्रेटिक थॉट, वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस से आया है, बिकॉज इट वाज पाइथागोरस हु ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड फ्रॉम देयर ही पिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल. क्योंकि वेस्टर्न थॉट में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम अक्रॉस दिस आइडिया ऑफ से पॉलिटिकल ऑफ सोल एंड ऑल.
ठीक है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वो हमें पाइथागोरस में देखने को मिलता है, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल comes into the lexicon of western thinking. Got it? तो ये इन पे एक वो है. अब सी एक 2017 में इलेक्ट्रिक्स के बारे में पूछ लिया गया था. तो परमेनाइडस इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. ठीक है, एंड परमेनाइडस क्रिटिसाइजेस प्लेटोस थियोरी ऑफ फॉर्म. ठीक, अब प्लेटो के बहुत सारे वर्क्स हैं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स, लॉज एक्सेट्रा. ठीक है, और लॉज में जैसे मैंने अभी थ्रू आउट एक कॉन्ट्रडिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की कि रिपब्लिक जो है बहुत आइडियलिस्ट वर्क है. ठीक है, देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक जो कि यंग प्लेटो लिख रहा है एंड लॉज जो कि एक मेच्योर प्लेटो लिख रहा है. हम ये भी देखेंगे क्या डिफरेंस है तो इन द टू ऑफ देम. बट देयर इज वन वेरी फेमस स्टेटमेंट यू मे नोट डाउन बाय ट्रेवर सॉन्डर्स. ट्रेवर सॉन्डर्स, देखो ट्रेवर सॉन्डर्स का एक स्टेटमेंट है दैट रिपब्लिक प्रेजेंट्स merely the theoretical ideal. The republic presents merely the theoretical ideal देखो द रिपब्लिक प्रेजेंट्स merely the theoretical ideal dot 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 the laws describe comma in effect comma the republic modified and realized in the conditions of this world so see, this is what has changed. ठीक है, so you will also find that when you study republic it is more presentable, more poetic and all, but when you come to laws you will find that it is very direct, it is kind of boring, and that is why laws is the most criticized work of Plato eventually. ठीक है, एक तो उसमें Socrates भी नहीं है. Secondly, it is not that flamboyant in terms of language and all. Got it? And while Republic talks about lot in terms of ethics, politics and all, laws is talking about very general laws. मतलब बहुत डिटेल में जा करके कि should we ban alcoholism, should we ban this, ये लॉ बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए. तो लॉज उस लेवल पे जा रही है. वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू गो अबाउट लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशंस एक्सेट्रा, सो ऑन सो फोर्थ. रिलीजन का क्या होना चाहिए, थीज्म होना चाहिए, एथीज्म होना चाहिए. सो इट इज वेरी, यू मे से ब्लैंड, बोरिंग सी है. एंड जिसके कई इंटरप्रिटेशन है. एक तो ये है कि टिल दिस टाइम प्लेटो इज एजेड, सो ही हैज लॉस्ट the way with writing and all. Secondly, a lot of people say that by this time he was actually influenced by Aristotelian critique and all, and that is why he changes his idea, he becomes more pragmatic. ठीक है, यहां पर यह भी बोला जाता है कि जो अभी तक हमने एक आइडिया देखा था सोक्रेटिस का, ये एक्रेजिया का आइडिया, दैट Socrates and eventually Plato rejects the weakness of will. ये कहीं ना कहीं लॉज में एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि मैन कैन नॉट बी परफेक्ट. ठीक है, मैन में की विल में वीकनेसेस होती हैं, एंड इन एक्चुअलिटी यू विल हैव टू मेक सर्टेन लॉज टू इंश्योर कि भाई क्रिमिनल्स भी होंगे. तो हमेशा रिफॉर्मेटरी जस्टिस विल नॉट वर्क. गॉट इट?
तो ये जो एक्रेजिया का जो एक मॉडल कॉन्सेप्ट जो अभी तक through Socrates, Plato was continuing, that also bends a little, that also gets transformed in his last work. He becomes more pragmatic, more practical. Got it? So I think this is all for today. Got it? We will come back to it. तो एक क्विक रिवीजन हम करेंगे जल्दी से, ठीक? इन विच डायलॉग वी डू नॉट फाइंड सॉक्रेटिस लॉज, ठीक है? एरिस्टोटल की एकेडमी का क्या नाम था? लाइसियम. एंड प्लेटो की एकेडमी. एंड इन लॉज वी डू नॉट फाइंड सॉक्रेटिस. एंड कहाँ कहाँ हमें उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? वी फाइंड समथिंग अबाउट सॉक्रेटिस in some of the work known as Comedy by Aristophanes, Clouds 2, Birds and Frogs. Then second description is Xenophon's Memorabilia, जिसमें we find the story of choice of Heracles, ठीक है? And then we find the trial of Socrates in this format, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, etc. And Ilancus हमें कहाँ मिलता है? Euthyphro में, ठीक है? And moving on, some scholars have given names to Socrates. तो पहले है Barker, half journalist, half professor. Then we have sophists who say no philosophy, Sabine, but इसका exception क्या है? Protagoras, who has given the concept of relativism. ठीक है? Then next is who describes sophists as private tutors, Maxi. Some best known are Abdera, Hippias, Gorgias, and Prodicus. ठीक है? Who were influenced by Socratic ideas? Aristippus of Cyrene, another is Erythenes of Athens. ठीक है? एंड एक ने हेडोनिज्म का स्कूल डाला और एक ने सिनिसिज्म का स्कूल डाला. ठीक है? एंड देन वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ यूडाइमोनिया. वन इज रैशनल यूडाइमोनिया, अनदर इज साइकोलॉजिकल यूडाइमोनिया. ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you will be able to remember these complex words and terms. We will continue from here. Okay? Thank you. Have a good day. Take care.